All right. So before we move on to, all the technical stuff, although I have introduced myself to you, I would again like to introduce myself. My name is Poonam Kumari. I have done my bachelor's in economics from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. I was in the batch of 2018, actually, batch 2015 to 2018. Post that, I right after my graduation, I went on to do masters in economics from Indian Statistical Institute, Delhi. So that was also for 2 years. So I did that for 2 years, and I graduated from there in 2020. I have also worked as a data scientist for 1.5 years, and from last 1.5 years I am teaching. I'm full-time teaching economics to undergraduate students. So that was, more or less what I wanted to tell you about myself. And so before moving on, I would also like to tell you a brief overview regarding what all you are going to receive in this course. What all features are we going to have in this course? And before I move on, I just want to ask you guys, are you guys okay with Hindi, English? Are you guys okay with it being bilingual, or do you want me to strictly, stick to English? What do you guys like? Okay, Nagalakshmi says English is fine. Okay, English. Yeah, I would just like to know that, so that we can comfortable with bilingual. Okay, Raj. Okay, bilingual is fine. Hindi fine. Okay, English. Okay, lovely. Riddhi, Hindi fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So I think everybody seems fine with me using Hindi and English. So okay, I'll keep that in mind, and from next time हम उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे with a mix of Hindi and English. Okay, all right. So let me share my screen and tell you a bit about what are we. So a bit about what all will be covered in these courses. So right now we are this is a course in mathematical methods for economics 2, which is meant for Delhi University semester 2 students. But if you are somebody who is interested in learning the basics, agar aapko economics mathematics के fundamentals जानने हैं, if you are planning later in your after your graduation maybe to pursue masters in economics or something related to economics, these lectures are going to be helpful for you. So yes, I would say they are specifically designed for semester 2 students, but if you're somebody who wants to learn the basics, these will be a great addition to you. So the same goes for mathematical methods for economics 2 and for introductory macro as well. So a few things. This course is going to be a live course, meaning we will going to have live classes. So every weekend we are going to meet. So weekend would mean Saturdays and Sundays. So we will have evening classes for mathematics, and for macroeconomics we'll be meeting once a week, which is so we will be having morning classes for macroeconomics. So average duration would be 3 hours for macroeconomics, and average duration for maths class will be 2 to 2.5 hours. Okay, and so after every single class the recordings will be uploaded and you will have access to all the recordings. सारी के सारी recordings की आपको access होगी, live classes होगी हमारे पास, and for every single chapter that we are going to do here, you will have access to those notes. So the moment so one thing that I could do is,
जो भी chapters we are going to study, I can send you notes beforehand, so maybe you're more prepared. Or I can do after class, I can send you the notes, and I can send you the class notes as well. So I'll be sending you notes for all the chapters that are there in all the units, or we'll discuss the syllabus. And so after every single unit is done, we will discuss what all questions, what all kinds of questions have been asked in the Delhi University exam, so that you're prepared not just conceptually, but how to tackle your exams. So you can tackle that as well. And so we will also have a WhatsApp group wherein you can discuss your doubts, you can send me your queries, and you guys can help each other out as well. And post jab bhi we are done with all our course, we will have doubt classes after our course ends. So jab bhi aapke exam honge, we can have as many doubt classes as you would like in the end, which is after we are done with the course. And of course the final thing would be, I mean, you can contact me for any kind of doubt that you're facing, either in macro or maths or general, in general. So I'll be available. Feel free to contact me anytime. No problem. There's no restriction. You can contact me anytime with any kinds of doubt that you're facing, in your studies. So this was a bit about what all we will be having in our course. There's one more announcement that I want to make, which is, so there's one more announcement that I want to make, is that we are also having the first demo lecture for macroeconomics tomorrow morning at 10 a.m. So for those of you who would like to attend that class, you please feel free to attend that. And apart from that, there's one more thing that I wanted to share. So I just want to get done with all the housekeeping. Okay, Yuvraj says, ma'am, I have not studied very seriously in semester 1 for MME. So if I face in some basic query which was done in semi, will you revise that concept? So Yuvraj, what we can do, if you're facing any kinds of problem in learning the basic, you can tell me which topic are you facing problem, and I can, explain it to you personally. And if I feel that, ma'am, like there is a topic present discounted value that yes, was done in semester 1, but in integration part also there is some part of present discounted value. right, So I'm understanding that specific topic, for example. okay. So will you teach me from the beginning, like what was taught in semester 1 to? सो युवराज, एनीथिंग जो भी हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, अगर वो आता है तो we'll discuss that. Let's say जैसे कि आपने बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल लिया डिस्काउंटेड वैल्यू का, so we will cover that, no problem with that. बट एक होता है ना कि एक बहुत मेजर पोर्शन, सपोज बहुत ही बेसिक से we cannot start because we also have to finish the lectures in the limited time. बट अगर आपको इस तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एवरी लाइक कभी भी आप मुझे मैसेज पे या क्लास के बाद वी कैन डिस्कस वेर एवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. नो इश्यूज विद दैट. आई विल बी ओपन टू सॉल्विंग दोस. yes okay. So one more thing I want to clarify also, that so this is just a housekeeping thing. So whenever I'm sending you email, I am just wondering, I think many of my mails are getting sent to your spam or your social tab or your promotion tab. So I just want you guys to do one thing, that maybe you can check your folder and you can just report my name as not spam, so that next time I send you some emails, you get those emails. Okay. So I mean, I just don't want you guys to miss out on any kind of information. Okay. So it went to primary. Lovely to see that. Okay, all right. So these are all the things that I want to discuss before starting with the lecture. If you guys have any concerns, anything that you would like to discuss, feel free. And yes. Yeah. John, do you have something to say?
say something? Okay, I think it was just something else. Okay, all right. So if you guys have any concerns, any queries, कोई भी doubt हो आपको before starting with the lecture, feel free to share that with me right now. If not, we will simply jump on to the lecture now. So we'll just have a look at what all is covered, what all we will be covering, क्या syllabus क्या है, कितना time लगेगा और broadly क्या topics होंगे हमारे पास. What all books will be there that will serve as a reference for you. Okay, Nagalash. Okay, just to point out one thing, many of have studied in online college till date and have begun our last semester offline. Okay, so please explain the topic that you are about to study, including the basics related to concepts. Okay, Nagalakshmi, sure, I'll keep that in mind. I'll try to build things up from the very basics, but I just want to say something, only basics related to concepts. Okay, lovely. Sure, I will do that. But I just want to mention, like, for example, there is one topic that we are going to discuss this time, which is functions of multiple variables. Like we have function in one variable, we'll have function in multiple variables also. So all the topics that have been done previously, काफी सारे concepts पिछले semester में cover हो जाते हैं. So I will not go into all the exact details, but जो भी चीजें हमें नए वाले concept समझने के लिए important हैं, I will cover all of them. And what we can do, if many of you are facing similar kinds of problems, or if you have a personal query, let's say किसी भी इंसान को let's say derivatives में थोड़ी problem है, या उन्हें matrix या linear algebra को कोई particular portion नहीं समझ में आ रहा है, so you can come to me with all your personal doubts and I'll be happy to resolve them for you. So yes, okay, Nagalakshmi, I'll keep that in mind. Sure. Okay, all right. So I think we are done with all the housekeeping stuff. We can move on to the actual lecture. Okay, I will share my screen now. So these are the notes that I'm talking about. So after every single class, you will get access to the lectures and the notes related to that. Okay. All right. So the reference for this course, the reference book for this course is going to be Sitsetter and Hammond, Mathematics for Economic Analysis. अगर आपके पास ये book है, well and good. If not, I'll share this book with you guys after the class. And this is the book that you have to, like, this is a great book. You can refer it to understand any single concept that you don't understand. Let's say अभी हम लोग functions of several variables discuss करने वाले हैं. Function of one variable में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, you can go back to that book. And it's yeah. Someone's trying to say something. Karthik. Yes, Karthik, do you want to say something? Okay, no. Okay, all right. So अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, so this is your reference book for general mathematical concepts which are very relevant from economics perspective. Okay, I'll share this book with you if you don't have it. Okay, so the course, the syllabus for this course includes 4 major parts. The first part is going to deal with functions of several variables. So function which have multiple variables.
So in your previous semester or earlier, maybe in your class 12, 11, you must have studied functions of single variable. So you used to write fx, right? So that y is fx. So this x was one variable. So you always used to deal with functions of single variable. But जैसे ही आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करना शुरू करते हो, यू अंडरस्टैंड दैट ओनली वन वेरिएबल से काम नहीं चलेगा. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ पर्टिकुलर फिनोमिना एट हैंड. सो वो सब स्टडी करने के लिए वी नीड टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स which are there. So that is all that we study in functions of several variable. So level curve क्या होता है, डोमेन क्या होती है, टेंजेंट प्लेन्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, होमोथेटिक फंक्शन क्या होता है, होमोजेनस फंक्शन क्या होता है. ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट 1. So it comprises of two chapters, chapter 15 and chapter 16. Which particular sections you have to do, that is also written here. So you have to only do these two sections from 15.1 to 15.8, and similarly for chapter 16 you have to do 16.1 to 10. And for people, specifically for Delhi University people, what is happening is this unit has a weightage of 30% of your finals. So जितना भी आप 75% में से 30% जो marks हैं आपके, they are going to come from unit 1. So once we have a clear understanding of what is meant by functions of several variables, we move on to multivariate optimization. What does that mean? That means, so whenever we talk about economics is, जब भी आप बात करते हो, it's about allocation of scarce resources. So they say that the resources that are available in this world are scarce, they are limited. तो अगर कोई भी चीज लिमिटेड होती है, so the next thing that comes into being is how to allocate them in such a way that either your utility is maximized or your profits are maximized. So things like that. तो उसको करने के लिए we have to do optimization meaning how to get maximum value out of some given constraints. So वो सब study करने के लिए we need some tools to understand that, and that is what we are going to study in multivariate optimization. So that would mean how would you optimize when you have multiple variables in your functions. Just ignore the noise that's coming in the background. There are some kids outside my apartment. Anyways, okay. So we will go through what are the different tools that we can use to optimize a given function given different kinds of constraints. So what topics you have to study, it's all written here. And post we are done with multivariate optimization, we will be dealing with linear programming. So when your objective function, when your function that you either want to maximize or minimize is a linear function, that becomes a linear programming problem. So this has great application in, let's say, you own a big factory, you have a big inventory at your place. Okay, बहुत सारे products आप बनाते हो, बहुत सारे inputs हैं, बहुत सारे outputs हैं. तो किस तरीके से उस पूरी की पूरी inventory को manage किया जाए? इस तरीके के problems, very interesting problems, they can be solved using the concept of linear programming. So we will study a different some concepts related to linear programming, how to solve those kinds of problems. So we will deal with linear programming as well. And after that, there are a few topics that we will be covering, which is the topics on integration, differential equation, and difference equation. So if you go on to study macroeconomics later in your courses, you will see that काफी सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, काफी बार आपको डिफरेंस इक्वेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे. Why is that? So whenever so as economists, as students of economics, we are interested in how things develop over time.
जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कैसे चेंज हो रहा है, जैसे हाउ इज इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग, हाउ इज सेविंग्स ग्रोइंग ओवर टाइम. सो टाइम को आप एक डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि टाइम की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 2. So if you start taking it as a discrete values, then it becomes a problem of difference equations. But ऐसा भी हो सकता है कि rather than considering time as a discrete variable, you start taking time as a continuous variable. Let's say time is something which takes any value, it's a continuous number. So whenever you start dealing with time as a continuous variable, you start to see differential equations. So this is just a small difference between how you treat time, and based on that your concepts or the kinds of tool that you will have to use, they will change. So this is what we will be studying in differential equations, how to solve different kinds of differential equations, because they'll be helpful for you when you study macro later. And how do you deal with difference equations? So whenever you consider time as a discrete variable, how will you be dealing with that? And we'll also see how to integrate, how to find out the area under a particular curve, what is definite integrals. So this would be broadly the the topics that we will be covering throughout our course. So the first unit is going to have a weightage of 30%. Multivariate optimization would have a weightage of 35%. Linear programming is given small weightage, so you can expect a single question of 8 marks to 9, 7, whatever marks from linear programming. And rest 25% you can expect from these three topics. So the major topics that you're going to face are going to be functions of several real variables and multivariate optimization. So I also want to say something. So whoever wants to study, pursue higher studies in economics, or for those of you who will be moving to your second year, these topics are very important. आप चाहे micro economics पढ़ लो, चाहे आप macro economics पढ़ लो, you will always have to deal with optimization problem. So optimization problems कैसे दे देंगे आपको कि this function is given, these are the following constraint, please maximize this function. तो आपके पूरे मॉडल ही इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे. सो दिस इज लाइक अ फाउंडेशन that will be there for all your economics courses that you will be doing later. All right. So this is a brief overview of what all we are going to study in this course. If you have any queries, any concerns, any doubts in understanding the syllabus or anything, feel free to ask. Okay, so shall we move ahead? So now is the time when we'll be actually diving into the lecture. Okay, Shalini. Okay. Yes, Shalini. I think Shalini, you raised your hand. Do you want to say something? Okay, okay, Shalini, no problem. All right, guys. So now let's move on to the lecture. So I hope you're able to see the screen properly, hear me and see me. Everything is fine, right? Yes, ma'am. Okay, wonderful, wonderful. All right. So we are going to start with
chapter 15, which is functions of several real variables. All right. So सबसे पहले we are going to start with why is there a need to study this particular thing? क्या जरूरत है हमें functions of several real variables पढ़ने की? क्या जरूरत है? मतलब what is the whole idea or agenda or need for studying these? So सबसे पहले the simple logic why we are studying it is because जो भी phenomena real world में होते हैं they are not very simple. इतने simple नहीं है कि let's say what one variable, let's say you own an agriculture land, आप जितना खाद डालोगे उतनी ज़्यादा yield बढ़ जाएगी. There is, okay, this is a very simple relationship, one-on-one relationship. The more fertilizer you add to the field, the more is your yield. But कई बार क्या होता है, इतने simple relationships नहीं होते. जैसे if we talk about demand for a particular product, demand for a particular product, it is not just dependent on कि उस product का price क्या है, it is also dependent on जो उसको खरीद रहा है उसकी income क्या है, उसके taste क्या है, वो किस तरीके के इलाके में रहता है, उसका background क्या है. So one particular thing which is the demand, it is affected by multiple variables, right? Price, income, taste, location, education, it can depend on a whole lot of things. So जब भी हम economics में आगे पढ़ाई करेंगे, we will not be restricted to single variables. We will have to see कि अलग-अलग variables होने से क्या-क्या चीजों पे effect पड़ता है. And that is the rationale that we are studying functions of several real variables. We need to know different properties regarding those functions अगर हम उस तरीके के behavior को model करना चाहते हैं. ठीक है? All right. So सबसे पहले if we want to define a function of two variables, simple case है, two variables से start करते हैं. सबसे पहले one variable होता है. Several variable में सबसे simplest, सबसे shortest जो form है वो है functions of two variables. So functions of two variables. So I would say a function f of two variables x and y with domain D. What is it? It is a rule that assigns a specified number f(x, y) to each point x, y in D. So this is just a definition of what a function of two variable means. Let's understand this definition. What does that mean? So a function which we are calling f, a function of two variables. What are the two variables? X and y with domain D. What is meant by domain? Domain का मतलब होता है वो सारे possible values जिस पे ये function defined है. Okay? क्या क्या possible x और y की values हो सकती है? That is called domain in a broader sense. Okay? So a function f of two variables x, y जिसकी domain है D. What is it? What is that function? That function is a rule. वो एक rule है. कैसा rule है? What kind of a rule it is? It is a rule that assigns a specified number. So it assigns a number which is fx, y to each point x, y in domain. So you pick. So basically, what do? This is your domain. You pick points from this domain, and this is your function. Okay, this is your function. It's like a machine. Okay,
So these numbers will pass through this machine and they will give you f of x comma y. Okay. So what is happening? So you are picking numbers from this domain, you are passing it through the function f, and it is giving you a number. Okay. So this is what is also explained in the definition, that a function f of two variables x and y with domain D. So this is our domain, all the possible values of x, y that are there. And this function is what? This function is a rule which provides a value against every single value that is there. Okay. This is how we define functions of two variables. अगर आप एग्जाम्पल लेके ट्राई करना चाहते हो, what does it mean? Let's say I have a function which is given by 2x plus x square y cube. Okay, this is one of my functions, and domain for this function is pair of all real numbers. Pair of all real numbers matlab my domain is x comma y, and this x could be any real number, कोई भी real number 1 2 3 4 2.2 1 0 0 0 0 anything, it could be any real number. Okay, and this y could also be any real number. So इस तरीके की pairing आप कोई भी कर दो, that will become our domain. इसको हम लोग whenever if we want to write this, we write that the domain is R2. R is set of real numbers, R2 means it's a plane of real numbers. Okay, so अगर suppose मेरे पास ये function है, and if I tell you, please tell me what is the value of this function, when my x is 1 and my y is 1, what will you say? So what will this function do? This function will take x value equals 1, y value equals 1. It will apply these values to the machine. What is this machine? This machine is this function. You will put these values inside and you will get a number. Okay. So what was your function? Your function was a rule which took these values x equals to 1, y equals to 1, and it gave you a specified number, right? At any point, if you feel lost or anything, you can just unmute yourself, ask your doubt, no problem. Okay. All right. So what will be f1 comma 1? What will I do? I will put these values in the function and see what this value is. So I will write, I'll write 2 times x, my x is 1, plus 1 squared, and then 1 cube. So what is my value? 2 plus 1, so 3. So if you put 1 comma 1 in this function, you got a value of 3, right? So this is how we define functions of two variables. So similarly, इसी idea को if we want to extend, अगर हम इसी idea को और आगे extend करना चाहें, तो we can in a similar way define functions of n variables, functions of multiple variables. Okay, so if you want to define functions of n variable, what will you say? So I will say that a function of n variables, n is any number, it could be 2 3 4 10, based on whatever context you have, n कोई भी value ले सकता है, ठीक है? When n takes value 1, then it becomes your function in a single variable. When it takes value 2, it's a function in 2 variables. Okay, so a function of n variables, what are these variables? x1, x2 up to, let's say, xn. They will also have a domain with domain D. Domain D का फिर से मतलब क्या है? क्या क्या possible values of ये वाला जो वेक्टर है हमारा,
इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पे ये फंक्शन हमें वैल्यूज देगा. ओके, the set of all those values is called domain. So a function of n variables with domain D, what is that function? That function is a rule. वो एक rule है which assigns a specified number what is that number? Fx1 up to xn to each of n vector. n vector मतलब n x1 x2 x3 up to xn है, इसलिए हम उसको n वेक्टर बोल रहे हैं. n मेंबर का एक वेक्टर है. ठीक है, n वेक्टर x1 up to xn in D. So what is it saying? That you have a domain D. इस डोमेन में क्या क्या होगा? डिफरेंट अलग अलग तरीके के n वेक्टर्स होंगे. n नंबर्स, ऐसा वेक्टर होगा जिसमें n मेंबर्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होंगे. अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन ये सारे वेक्टर्स अपने it'll let them pass through itself and it'll give you a value. So if you pick x1 up to xn from here, this will be a rule. आप अपनी values इसके through pass करोगे and what will you get? f x1 up to xn. ठीक है, this is how you define function of n variables. This is the general way. All right. One of the examples of a function of n variable could be, let's say my function is given by, it's given by f x1 x2 up to xn equals, how will you write it? Let's say a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn. Okay, all these a1 a2 up to an, they are some constants. We don't know the value, but some constant. Okay, so this is how you can define one of the function. या एक function इस तरीके का हो सकता है. This is called a linear function. Linear function in n variables. So if I give you some values of x1 x2 up to xn, you'll be easily able to find what will be the value of this function by simply putting x1 x2 xn wherever you have these values. All right, are we good with that? Yes, ma'am. Wonderful. Okay, so can you give me an example of a function of n variables? Any example that is coming to your mind? Let's say mean, geometric mean, arithmetic mean, anything that is coming to your mind. Acha, tell me, how do you find arithmetic mean? मैंने अगर आपको ना n numbers दिए हैं, x1 x2 up to xn, all right, and I've asked you to find what is the average value out of these numbers, तो आप किस तरीके से find out करोगे? And a1 plus a2 till an. Okay, so you mean x1, right? x1 Yes. plus, yeah, x1 plus x2 up to xn. xn, yes, Divided by n. Divided by n. Yes, wonderful. So ये भी एक example हो गया एक function of n variables का, right? जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? तो अब हमारा function क्या हो गया है? हमारा function किस तरीके से defined है? That is given by x1 plus x2 up to xn and then divided by n. So this is also a function of n variables, right? So इस तरीके से अलग अलग different kinds of functions you can have, and this is a basic overview of कि किस तरीके से defined होता है, क्या होता है. ठीक है, अब now जैसे while talking about functions of n variables, we talked about domain कि क्या क्या possible values हो सकती हैं. n vectors जो हैं हमारे, वो क्या क्या possible values ले सकते हैं.
अब अगर रियल वर्ल्ड अगर रियल वर्ल्ड में अगर आपको एक रियल एग्जांपल दे दिया जाए और पूछा जाए कि टेल मी व्हाट इज इट्स डोमेन, तो उस केस को हम लोग कैसे डील करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज अ डोमेन. ओके, डोमेन होती क्या है, और फिर वंस वी नो व्हाट डोमेन इज we'll be simply able to find out कि डोमेन को कैसे निकालना है. ठीक है, सो डोमेन, so it is the largest. so डोमेन हमेशा एक फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है. जैसे जैसे आपका फंक्शन बदलेगा डोमेन बदलती जाएगी, राइट. so we always have domain of a function. Domain is always associated with a function. Okay, so a domain of a function which is defined by some formula. Okay, so a domain of a function is the largest possible set of vectors in which the function gives a meaningful and unique value. Okay, so what is a domain? A domain, so पहली बात तो डोमेन हमेशा एक फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है. The moment you change function, your domain will change. Okay, so a domain of a function is the largest possible set of vectors. आप different vectors collect करते जाओ जिनके लिए आपका फंक्शन कोई मीनिंगफुल वैल्यू देता है, उसका सबसे बड़ा जो सेट होगा that will be called your domain. क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हैं जिनके लिए मेरा फंक्शन एक यूनिक और मीनिंगफुल वैल्यू दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन. ओके, मीनिंगफुल वैल्यू देने का मतलब है कि वैल्यूज डिफाइंड हो. सपोज आई हैव अ फंक्शन, लेट्स से fx equals 1 by x. Okay, and if you start saying ki please let's find out what is the value of this function when x is 0, but it's not defined, right? Whenever you have 0 in the denominator, that value is not defined, right? So आपका function x equals to 0 के लिए कोई भी meaningful value नहीं दे रहा है, right? That is why x is equal to 0 will not be a part of its domain. Okay, all right. So x equals to 0 will not be a part of the domain of this particular function, right? And what does it mean by giving unique value? Unique value, तो by definition हमारी जो हम भी जैसे ही function define करते हैं, function की definition क्या होती है कि एक particular value के लिए एक particular, let's say this is my x in my domain, इस x के लिए एक ही value ऑफ फंक्शन आनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि इस फंक्शन में मैंने x डाला तो मेरे फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही है, राइट. जैसे सपोज माय फंक्शन, लेट्स से fx equals mod x. No, that's not a good example. Let me see what is a good example. So what is not a function? So if I put, let's say x equals 1, my function takes 2 values. For a given value of x, if, yeah, okay, suppose I have a function like this. Okay, suppose I have a function like this. Okay, just assume किस तरीके की रिलेशनशिप है, क्या है, doesn't matter, but
let's say this is x equals 2. Okay, so अगर x equals to 2 मेरी डोमेन में है, that means मेरे फंक्शन को यूनिक वैल्यू लेनी चाहिए x equals to 2 के लिए. बट जब भी आप x equals to 2 डालोगे अपने फंक्शन में, आपका जो फंक्शन है वो ये वैल्यू भी ले सकता है और ये वैल्यू भी ले सकता है, राइट? इट कैन टेक अप 2 वैल्यूज. So that means x equals to 2 cannot be a part of the domain of this function. So by definition this is not a function. और ये वाली डोमेन के ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती जो कि इसको एक फंक्शन बनाए. ठीक है? So there are two properties that are needed for a particular value to be in the domain. One, the function should be able to give some meaningful value, and the function should have unique values whenever you put that value in that function. Okay, so these are two important conditions. Anybody has any doubt in this? Sometimes I feel like I am just talking to myself and nobody is listening. No doubt, ma'am. Okay, okay, lovely, wonderful. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Wonderful. Yes. Okay, so let's do a question then. Okay. Okay. So I give you a function and you tell me कि इसकी domain क्या है. ठीक है? This is my function. Okay, this is my function, and we have to discuss. You have to tell me what is the domain of this function. इस function की domain क्या है? तो domain क्या होती है? पहले तो एक बार ये देख लेते हैं. Domain क्या होती है? ये function meaningful value देना चाहिए. And in most of the cases, if it is defined that this is a function, that means it will give you unique values. So most of the time, you just have to check कि x और y की क्या-क्या values के लिए this function is giving you meaningful values. So अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी x की value क्या होनी चाहिए और y की value क्या होनी चाहिए जब ये function मुझे meaningful values देगा. ठीक है? So feel free to take 1 or 2 minutes. Yes, yes, yes. Ma'am, x की value 1 to infinity. Okay. And y की value 0 to infinity. Open brackets. Open brackets means 1 में नहीं include करूँ, right? Closed, ma'am. 1 को close करूँ. Yes, ma'am. Infinity open. Infinity open करूँ. Okay. Okay. और y को क्या करूँ? Ma'am, 0 to infinity both open. No, 0 close. 0 close. 0 close. Okay. Yeah. Okay. ठीक है. Okay. So who gave me the answer? Ma'am, Yuvraj Jain. Okay, Yuvraj. Yeah, please tell us why do you think this is the correct answer? या फिर आपने माइनस इन्फिनिटी से 1 तक की चीजें क्यों छोड़ दी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की चीजें क्यों छोड़ दी? Ma'am, because in under root, square root, ma'am, कभी negative नहीं हो सकता. Yes. So like if we take value less than 1 in x, then we will get negative in the square root. Right. And same for y. Like if we take less than 0, then the value will be negative in square root. So it will be not meaningful. Exactly, exactly. So just to reiterate जो युवराज ने बोला, so what is happening? अगर ये फंक्शन को मीनिंगफुल वैल्यू लेनी है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे भी मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे भी मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए. तो एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती है, राइट? सो मेरी जो भी वैल्यूज हैं, so my x1 minus 1 should be a positive number, right? Because under root मुझे उसका लेना है, and under root cannot have negative value, right? Hello Vivek, do you want to say something? Okay, all right. Vivek has. No, ma'am. Okay. All right. Okay.
सो आई नो अंडर रूट के अंदर मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए, राइट? तो मेरे पास एक कंडीशन होगी कि मेरी अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दे शुड बी पॉजिटिव। 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली मेरे पास क्या कंडीशन है, दैट y is also inside a under root, so y value should also be greater than 0 or equal to 0, okay? So अब इस inequality से मेरे पास जो आंसर है वो आ जाता है that x should be greater than equal to 1। ये कब होगा? जब x 1 या 1 से बड़ा होगा, and when will this happen? When y is greater than or equal to 0, right? So y is greater than equal to 0। अब इसको और एक तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं that x belongs to, this is a symbol of belongs to, okay? belongs to मतलब उसका पार्ट होना, x should be a part of, it should belong to what? should belong to 1 to infinity। infinity मतलब इस कितनी भी बड़ी वैल्यूज ले सकता है, and this is closed, so there are two types of brackets, this is closed and this is open, so closed and this is open। closed bracket जब भी होता है तो उसका मतलब होता है कि closed bracket के साइड में जो भी लिखा हुआ है वो वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है? सो जैसे यहाँ पे closed bracket 1 है, that means 1 वैल्यू हो सकती है, 1 is included, and open means it is not included, okay? it is excluded, this is included, this is excluded, okay, yeah, all right. So similarly I can write that y belongs to 0 comma infinity। मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखा है, क्यों? क्योंकि 0 हो सकता है, राइट? सो अब इस फंक्शन के लिए आपकी डोमेन क्या होगी? all the points which are where x is greater than equal to 1 and where y is greater than 0। अगर आपको इस पर्टिकुलर डोमेन जो है अगर इसको ड्रॉ करना हो तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे सपोज ग्राफ पे दिखाना हो कि व्हाट इज माय डोमेन, देन व्हाट विल आई डू? लेट्स से this is x, this is y, okay, this is 0, and yeah, this is x equals 1, ठीक है? सो मैं कौन सा एरिया होगा जिसमें से मैं वैल्यू उठा के इस फंक्शन में डाल सकती हूँ? जैसे हमने निकाल दिया है कि हमारी डोमेन ये है, तो अब मैं इसको प्लॉट करना चाह रही हूँ। मैं कैसे प्लॉट करूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो मेरी डोमेन में हैं? सो जैसे चलो, जस्ट टू गिव यू अ हिंट व्हाट कैन आई डू, लेट्स से हमने क्या किया, बिकॉज आई हैड x greater than equal to 1 and y greater than equal to 0, okay? So मैंने क्या किया, मैंने x equals 1 को प्लॉट किया, so this is x equals 1, so this is x equals 1, right? And another thing that I had to plot was y greater than equal to 0, so मैंने y equals 0 को भी प्लॉट कर दी, ठीक है? अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा कौन सा सेक्शन होगा जो मेरी डोमेन होगा, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, या फिर ये वाला सेक्शन। y is greater than equal to 0 and x is greater than equal to 1, which area should I, मतलब किस एरिया को मैं कलर करूँ? First section. First section you mean this one? Yes, ma'am. Okay, कहाँ पे मैं, tell me where should I, so this whole thing I should yes, ma'am. color, right? Why is that? Yes, who gave the answer? Okay, yes, green part, okay. Nagalakshmi says green part, and I think I heard someone else. Please tell me. I'm Riddhi. Sorry? I'm Riddhi. Okay, Riddhi. Yes. Riddhi, so इसमें से, so you're saying इसमें से कोई भी आप point उठाओगे तो वो हमारी domain का part होगा, right? Yes, ma'am. Okay. So ये आपने कैसे किया? मतलब how did you draw it? या how did you think about it?
मैम बिकॉज जो फंक्शन की कॉमन वैल्यू है वो x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. राइट मैंने कॉमन पार्ट निकाला है इंटरसेक्शन. राइट. सो मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब मेरी वैल्यूज जो हैं वो इस साइड होनी चाहिए. राइट. यस मैम. एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज क्या बोली थी, y ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए. तो यस. y ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज है ये. सो अब इसमें से जो भी आपका कॉमन हिस्सा आता है दैट इज योर डोमेन. राइट. क्योंकि आपको ये दोनों वैल्यूज एक साथ चाहिए. राइट. यस मैम. सो दिस होल एरिया इज योर डोमेन. ठीक है. So if there is a question that asks you, please draw the domain, find the domain, I hope you'll be able to visualize that. Right. अब इसी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा और डेल किया जाए, अगर आई होप एवरीबडी इज फाइन टिल दिस पॉइंट, सबको समझ में आया? यस मैम. ओके, लवली. ऑल राइट. तो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं. यस. ओके, नागलक्ष्मी सर. यस, it's lovely to hear answers. Online mode में सिर्फ यही difficulty होती है, I'm not able to see your faces. So yes, please keep interacting. Please writing whether you're understanding it or not in your chats, or unmute yourself. I'd love that. Yes. Okay. Yeah, moving on. Next question करते हैं. इसमें भी हम लोग डोमेन ही फाइंड करेंगे और थोड़ा सा प्लॉट करके देखेंगे कि डोमेन किस तरीके से दिखती है. ठीक है. So let's say I have a function gx comma y which is given by 2 divided by under root x squared plus y squared minus 4 plus under root 9 minus x squared plus y squared. Okay. So now you have to tell me what is the domain of this function. And once we are done with finding the domain, we will plot the domain as well. Okay. I'm giving you one minute, 1.5 minutes. Take your time and find out, and then we'll together do this question and plot it. So कौन सी x और y की वैल्यू है जो इस फंक्शन को मीनिंगफुल वैल्यूज देंगी? Yes. Are you guys following? Are you doing it? Yes ma'am. Okay, lovely.
You don't exactly have to find कि कौन सी x ये होना चाहिए वो होना चाहिए. That's not what I need. I just need a basic कि you can just tell me x square plus y square किसके बीच में values ले. That is also fine. Ma'am, 4, 9. Where 9 has a closed bracket. Okay. So what you are saying is, okay, you've done it right. Okay, let's do it. And after that I've plot this graph. So the common area will be the answer, right? Common area will be the domain. Yes, जो दोनों को satisfy करे. Yes. So step by step देखते हैं कि क्या क्या possible values हैं. ठीक है. So सबसे पहले एक part of the function is this. ठीक है, जिसके denominator पे हमारे पास ये function है, and this function is x square plus y square minus 4. So एक चीज तो है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं they need to be positive. ठीक है, that is one thing. Second thing, because ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो वैल्यूज नहीं रख सकते, राइट? Because function will become undefined, not defined in that case. So what I need my function to be, that this whole thing which is inside should be greater than 0. It should not be equal to 0. So this is one important point wherein people make mistakes, that it cannot be equal to 0. Okay, can't be equal to 0. Okay, it cannot be equal to 0, right? Similarly, I can see that this whole thing, 9 minus x square minus y square, this is also under a root, so this should be greater than or equal to 0. It should take a positive value, but because it's in numerator, it can take a equal to 0 value, right? So this is also where you need to be careful कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है. ठीक है. So now let's find out the common area. So that means अब if you bring this 4 this side, what do you get? This should be equal, greater than 4, and this 9 minus x squared plus y squared is greater than equal to 0. So if you change the signs on both sides, जो भी inequality का sign होता है वो change हो जाता है, right? जैसे suppose मैंने लिखा that 3 is greater than 1. ठीक है. अब now I want to see what is the relationship between -3 and -1. What would you do? Would the sign, like the inequality sign, remain the same or will it get reversed? Reversed, right? Sign will be changed. Sign will be changed, yes. So जब भी आप एक इक्वेशन को बोथ साइड साइन चेंज कर देते हो तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे दोनों साइड. देन व्हाट विल हैपन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9. अब हमारा साइन चेंज हमें करना पड़ेगा. इट इज लेस देन इक्वल टू 0. ओके. So यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई है that is x square plus y square is less than equal to 9. Okay. So from here I can see that my x square plus y square is greater than 4, right? And from here I can see that my x square plus y square is less than equal to 9. Okay. So this thing is my domain. You don't need to break it down too much. For our purposes, this is fine, right? So हमारा x और y किस तरीके की values होनी चाहिए such that x square plus y square belongs to open bracket 4 and closed bracket 9, right? 9 included है, 4 excluded है. ठीक है. Anybody having any doubts till this point? Because इसके बाद हम लोग प्लॉट करने के बारे में डिस्कस करेंगे. Any doubts till this point? No, ma'am. No. Okay, lovely. All right. Okay, no, not as of now. Okay, Mahalakshmi. Sorry. Okay, Nagalakshmi. Sure. Okay. So अब हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं.
यूजुअली जब भी आप मैथ्स में चीजें प्लॉट करने की कोशिश करोगे आपको बहुत it's the real beauty of maths comes out when you start plotting things and visualizing things. अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल के जो फंक्शन है उनको विजुअलाइज कैसे करें, वो थोड़े थोड़े ग्राफ्स हम लोग देखेंगे. So you will enjoy that part. So till that, let's try and plot this domain. So I have to plot. Okay, so you guys will tell me what is अगर x square plus y square is equal to let's say 1. ये किस चीज की इक्वेशन है? Circle. Circle. Okay, it's a equation of a circle. ठीक है. सर्कल की रेडियस क्या है? 1. सर्कल की रेडियस 1 है. ठीक है. सो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, राइट? x square plus y square equals 4 and x square plus y square equals 9, राइट? मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं. इन्हीं दोनों इक्वेशन का मुझे यूज करना है अपनी डोमेन को प्लॉट करने के लिए, राइट? So this would be a circle with radius what? 2 and 3. Okay, so this one would be true. Sorry, this one would be 2 and this one would be 3. 3. Okay, so अब इसको प्लॉट करते हैं. ठीक है, कि कौन सा एरिया रखना है कौन सा नहीं रखना वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं. ठीक है. Okay, so I have to make a circle. This is one circle. Okay, I have to make another circle. This is not so good, but ठीक है, हमारा काम चल जाएगा. ठीक है. Okay. So let's say this is 2 and this is 3. Okay. So this length is 2. This is x-axis. This is y-axis. This length is 2. This is also 2. This is -2 and this is also -2. This is 3. This is also 3. This is -3 and this is also -3. Okay. So मेरा ये इस पॉइंट तक समझ में आया सबको कि ये दो सर्कल कैसे ड्रॉ कर लिए? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, okay. उसके बाद my function is saying, what is my function saying? That this my जो भी मेरी डोमेन है उसमें x square plus y square की वैल्यू जो है should be greater than 4, right? तो वो greater than 4 वाला एरिया कौन सा होगा? Will it be this area, ये जो अंदर का है, या फिर बाहर वाला एरिया? Outside. आउटसाइड. वाई? बिकॉज आउटसाइड में वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 4 है, राइट? ये जो पूरा सर्कल है उस पे वैल्यू एग्जैक्टली 4 है, उसके अंदर वैल्यू 4 से कम है, उसके बाहर 4 से ज्यादा है. सो आई एम लुकिंग फॉर वैल्यूज विच इज आउटसाइड 4, राइट? सो मेरी जो वैल्यूज होंगी दे विल बी so they will be outside. So they'll be outside. ठीक है. So this is one thing. The second equation is what? X square plus y square is less than or equal to 9, right? So equal to में तो ये पूरा बाहर वाला सर्कल कवर हो गया, ये पूरा का पूरा सर्कल मेरी डोमेन में आ गया, right? और it should be less than means inside or outside. These values inside values, right? So inside values, so we want inside values from here and outside values from here. So अब इसका कॉमन एरिया क्या है? ये बीच में जो रिम बनी है वो हमारा कॉमन एरिया है, राइट? जो दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है. वैल्यूज ग्रेटर देन 4 भी है और लेस देन और इक्वल टू 9 भी है, राइट? Yes. राइट. सो ये जो हमारा बीच का एरिया है, जो कॉमन एरिया जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज आवर एरिया विच इज आवर डोमेन. Ignore the bad drawing, but you get the gist, right? ठीक है. अब हमारे पास एक चीज और है जिसका हमें ध्यान रखना है. ये तो चलो हमारा कॉमन एरिया आ गया. इसमें क्या है?
हमें पता है कि ये वाली जो 9 वाली वैल्यूज है ये इंक्लूडेड है, राइट, बट ये वाली जो 4 वाली वैल्यू है ये एक्सक्लूडेड है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन, बिकॉज द मोमेंट दे बिकम अ पार्ट ऑफ डोमेन हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली डोमेन हम लोग यूज करने लगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर था ये वाला, इट टेक्स वैल्यू 0 एंड दिस होल थिंग बिकम्स अनडिफाइंड, राइट, सो दैट कैन नॉट हैपन। तो हमारी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये जो है हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होंगी, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग यूजुअली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो हिस्सा है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डोमेन, और इसको फिर जो है हम लोग सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है। So if someone asks you to plot this domain, will you be able to do it now? Yes, ma'am. So जो भी values included नहीं है उसको आप dotted line से represent कर सकते हो, और जो भी included है उसको एक straight पूरी bold line से represent कर सकते हो, ठीक है। So this green rim with 4 not including will be my domain, okay. So this is my domain, all right. Any doubts till this point? No, ma'am. Okay, wonderful. Okay, I think, yeah, do you guys want a break for some time? Yes, no, do you guys want a break? We started at 5. Yeah, all right, okay, let's take a 10 minutes break, come back at 6:40. We will take up this lecture. Okay, maybe 5 minutes. Okay, all right, okay, we can take a 10 minutes break. Let's come back at 6:38 and then we will continue with the lecture. Okay, all right, I'll see you at 6:38. Okay, just want to talk to you for 5 minutes. Post class, please remember to. Yeah, sure, Nagalakshmi. You can talk to me. I'll be here only. Sure. Okay, all right. So previously what we've done is हमने डोमेन निकालना सीखा, डोमेन को प्लॉट करना सीखा, ठीक है। उसके बाद बिफोर वी मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स की पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर कॉनकेव क्या होगा, कॉन्वेक्स क्या होगा, टेक्निकल स्टफ में घुसने से पहले एक फील लेना जरूरी है कि फंक्शन दिखता कैसा है, जब हम बोल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव करें उसका क्या मतलब होगा। तो वो सब करने के लिए वी नीड टू नो हाउ दैट फंक्शन एक्चुअली लुक्स लाइक, राइट। सो यूजुअली जब भी हम लोग 2D में बात करते हैं, 2 डायमेंशनल मीनिंग x एंड y, अगर हमारा फंक्शन है सिंगल वेरिएबल में होता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक्स वाई लाइन प्लॉट करते हैं, कुछ कभी इस तरीके से दिखता है फंक्शन, कभी इस तरीके से दिखता है, कभी ऐसा दिखता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड you can easily plot those graphs on a piece of paper, right? बट जैसे ही कहानी 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल में जाती है चीजें कॉम्प्लेक्स होने लग जाती है। आप सिंपल चीजों को फिर भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर सकते हो, but the moment you start getting complex functions you are not able to do those kinds of things, ठीक है।
So we will first take a look at different kinds of functions, थोड़े बहुत variety of functions in 3D, वो कैसे दिखते हैं, and after that we'll move on to a very important concept which is level curve. ठीक है? So there is a very good website that you can also use for your projects or something. You can use for multiple reasons. It can be used. So let me overtake this one and share my screen again. Okay, so yes. So are you guys able to see something like GeoGebra on your screen? Yes, ma'am. Okay. So this is a website called GeoGebra. आपको अगर कभी भी इसको visit करना है, you can simply Google GeoGebra 3D calculator या 3D graphs. Okay. So what it lets you is आप जो भी function यहाँ पे लिखोगे उसको आप plot कर सकते हो. ठीक है? Suppose I wrote x equals 5. Okay. मैंने x is equal to 5 को अगर मैं 3D में प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी? It will show you that graph. And इसका बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि आप इसकी एक्सिस को रोटेट भी कर सकते हो. तो सपोज अगर मैं इस डायरेक्शन से, अगर मैं इसको 2D में कन्वर्ट करती हूँ, 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Z एक्सिस को बिल्कुल ही श्रिंक कर. ठीक है? This becomes 2D. कि आपको मेरा एरो दिख रहा है? एरो दिख रहा है? कर्सर दिख रहा है? ओके. सो 2D में x equals to 5 is simply a line, right? एक सिंपल सी लाइन है. ये रेड वाली हमारी x एक्सिस है, ग्रीन वाली हमारी y एक्सिस है, और ये x equals to 5 हमारी सिंपल लाइन है, राइट? बट जब आप इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हो तो क्या हो जाता है? Then you also have a z axis, right? तो ये हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज आवर z एक्सिस. तो x equals to 5 will look like a plane. एक ऐसा प्लेन कि 3D में आपने कट कर दिया है. कहाँ पे? x equals to 5. So this is where x is equals to 5 and आपने यहाँ पे एक पूरा प्लेन जो है प्लॉट कर दिया. ठीक है? चलो, this is a very simple one. Let's try some more. अगर ओके x equals to 5 हमने किया, लेट्स से अगर y एक्सिस में प्लॉट करना है कुछ तो कैसे करेंगे? we will say y equals 20. 20 is too much. Let's say y is equals to 5 only. Okay, and let's change its color settings. Okay, no. Okay, the color is not changing anyways. Okay, yeah, color I can change. Okay, so yeah. So when so अब मैंने जो प्लॉट किया है, लेट्स से इसको facing connectivity issues will rejoin in a minute. Sure Nagalakshmi. Okay. So इसको एक मोमेंट के लिए हमने हटा दिया है, और अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि y equals 5 को कैसे प्लॉट किया जाएगा 3D में, so what happens is this is our x axis, this green one is our y axis and this is our z axis. तो y equals 5 पे एक पूरा का पूरा प्लेन जो है प्लॉट कर दिया गया, राइट? So अगर इसको आप different directions से देखना चाहो, this is how it looks, right? So it's like a plane, xy plane. So this is your x axis, this is your y axis, and this direction vertical is your z axis. इस प्लेन पे y axis में एक प्रॉपर एक और प्लेन ड्रॉ कर दिया गया है at a point where y equals 5, right? अगर इसको भी प्लॉट ड्रॉ करें तो this also looks like this one, right? Are you guys able to see it? Yes, ma'am. Okay, great. अब सिमिलरली अगर z के लिए करें तो क्या हो जाएगा? z का जो प्लेन होगा वो xy प्लेन के पैरेलल होगा. So ये जो भी आप
ग्रे का लगा प्लेन देख रहे हो, इसके पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ हो जाएगा, राइट? So z equals 5 again. Okay, so yeah, iska suppose if I change the color, I want to change the color. So green. Yeah, so now this green one is a plane जो कि z equals 5 line पे है, ठीक है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, it's a plane like this. Right? So जो भी हमारा xy plane है, z axis है, z axis पे this here z value is 0, here z value is 0, इसके थोड़ा और ऊपर आओगे तो z value is 5, right? Did you guys are you guys able to, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ visualize हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, great. So ये तो सिंपल ग्राफ्स हो गए. थोड़े और कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे ग्राफ्स कर सकते हैं? आप किसी भी तरीके का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. सपोज एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, which will not be a straight line in 3D, it will be a equation of a plane, and it's a straight plane. Okay, so let's say my equation is 10x plus 10y plus 10z equals, let's say, 100. Okay, I remove this also. Okay, let me do 10 only. Yeah, okay. So अब ये क्या हो गया? अब this is a different kind of a plane, ठीक है? अब ये plane कैसा है? So this red one is your x-axis, this green one is your y-axis, and this blue one is your z-axis. तो ये जो plane है हमारा, जिसकी equation होगी x plus y plus z equals 1, it is something like this, which is cutting across all the axes, right? इसको अगर आप different direction से देखोगे तो ये आपको किस तरीके का दिखेगा? It's like आपने उस direction में एक mirror रख दिया, right? So you can play around this tool. So this is your xy plane, and this is the equation of your tangent plane, x plus y plus z equals 10 equals 1, right? So feel free to play around with this tool. I'm sure you'll learn a lot from this. एक और equation अगर हम लोग try करें, suppose x square plus y square is equal to 4, 1. We saw कि it's a equation of a circle, right? But what kind of a graph is x square plus y square plus z square? वो किस तरीके का ग्राफ होगा, right? एक बारी वो देखते हैं. So x square plus y square plus z square equals, let's say, 4. So अब ये क्या होगा? It is like a ball, okay? So earlier जब xy plane में सब कुछ देख रहे थे तो it was a circle. अब circle का 3D version जो है एक ball है, ठीक है? तो x square plus y square plus z square equals 4 will look like a ball, okay? So this is how it will look like. So जो भी हिस्सा आपको थोड़ा सा थोड़ा सा what will I say, not transparent, थोड़ा सा color different है, that means it is below the main axis, negative values में. So you must be seeing this is a little lighter shade of red, so that means it is below the 0, 0, 0 3D. So x is also less than 0, y is also less than 0, and
z is also less than 0 in this particular area. ठीक है? So this is how x square plus y square plus z square looks like in 3D. Okay, and let's say, okay, yeah, let's say if we want to plot a function which is x square plus y square, okay, how would that look like? So z equals x square plus y square. Okay, I'll remove this one. So अब ये किस तरीके से दिखेगा? So you can see that it is looking like a curved. What do you say? What name should I give it? It's looking like a cone, maybe, right? A curved cone, right? अगर आप इसको टॉप से देखोगे, बिल्कुल ही टॉप से, तो आपके पास सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस है, right? Then it looks like a circle, right? तो अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमें यही करना है. हमें क्या करना है? हमें okay. So first तो सबसे पहले तो you guys tell me, do you want me to plot something? कुछ चीजें प्लॉट करते हुए देखने का आपका मन है? Are you guys happy with this only? Yes, ma'am. Okay, lovely. Okay, so all right. Okay, so हमने अलग अलग तरीके से चीजें प्लॉट करके देखी. हमें काफी चीजें पता भी चली कि कैसा विजुअलाइज होने के लिए 3D में हमें देखना पड़ेगा, राइट? बट अब सपोज now I'll switch. Let's move on to the next topic at hand, which is level curve क्या होते हैं. तो अब उसको समझने से पहले एक दो चीजें कर लेते हैं. सपोज मेरे पास ये कर्व है जो भी हमने प्लॉट किया है, z equals x square plus y square, राइट? अब मैं आपको बोलती हूँ इस कर्व को जो है बीच में से कट कर दो. एट व्हाट पॉइंट? जहाँ पे z की वैल्यू लेट से 5 है, ठीक है? तो आपने क्या किया? इस कर्व को कट कर दिया. किस पॉइंट पे? व्हेन z was equals to 5, राइट? फिर मैंने बोला चलो z equals 10 पे भी कट करो. चलो 10 तो हमें दिखेगा नहीं, z equals 2 पे कट करो, ठीक है? तो आपने z equals 2 पे भी कट कर दिया. इसका अगर हम लोग इसका कलर we can change, let's change it to this one. Okay, yeah. तो हमने इसको तो अब क्या हो रहा है? This is our x-axis, this green one is our y-axis, and this is our z-axis. हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है? हमने बोला इस फंक्शन को z equals 5 पे कट कर दो. तो हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, एक स्लाइसिंग हो गई हमारे फंक्शन की, ठीक है? फिर हमने क्या बोला? z equals 2 पे भी सेम चीज कर दो, ठीक है? अब अगर आपने यहाँ पे जो भी स्लाइसिंग की है, ये कट कर जहाँ पे भी किया और कट करके अगर आप इसको टॉप से देख रहे हो, अगर आप इस ब्लू एरिया को टॉप से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको एक सर्कल दिखेगा, राइट? What kind of a circle will that be? That will be a circle which will have value what? X squared plus. All right, let's do that in our notebook. Abhi ke liye, what do you remember? That this was our function, and then we just cut this function at different z values. Okay, let me move on to the screen.
All right. So okay. My apologies, had a power cut here. Okay, Nagalakshmi, no problem. You'll have access to the recordings. You can revisit the concept. No problem. So what we have done here is we have plotted a graph. What kind of a graph? X square plus y square. This is our function. Okay, x square plus y square. And then हमने बोला कि इसको हम दो पॉइंट्स पे कट करेंगे. ठीक है, one is when z is 5 and one when z is 8. Just using the examples that I've written here, वहां पे हमने 2 और 5 पे कट किया था. ठीक है, so अब इस पर्टिकुलर एरिया जो भी फंक्शन में आएगा हमारा, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x square plus y square equals 8. Okay, and this one would be x square plus y square equals 5, right? All those xy points where z is 5. ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने जहां पे कट किया था, अब हमने हमारा व्यू चेंज कर लिया. पहले हम 3D में देख रहे थे, अब हमने व्यू 2D में बदल लिया और ये देखना चाह रहे हैं कि अब वो फंक्शन दिखता कैसा है. ठीक है, वो नैरो थी वैल्यू z की या बड़ी थी या क्या था. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशंस थी x square plus y square equals 5, उसको प्लॉट किया. सो दिस इज आवर इक्वेशन. ठीक है, एंड x square plus y square is equals to 8, इसको भी प्लॉट किया 2D में. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेवल कर्व. डिफरेंट value of the function for different values of z, that is called level curve. If we want to define level curve, so how is it defined? So if graph of a function is cut by a horizontal plane which is parallel to xy, horizontal plane parallel to xy meaning z equals to something. तो हमारा जो भी xy plane था उसकी पैरेलल हम हमारे फंक्शन को कट कर रहे थे. ठीक है, और जो भी रिजल्टिंग इंटरसेक्शन है वो प्लेन ने उसको कट किया और वो हमारा फंक्शन था. तो जो भी उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, ठीक है, अगर उसको आप XY प्लेन में प्लॉट कर दो, XY प्लेन मीनिंग 2D में, तो जो भी चीज आपको मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड अ लेवल कर्व फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z. ठीक है, सो सपोज हमने z इक्वल्स टू c वैल्यू लिखी है, तो जो भी हमारा लेवल कर्व होगा दैट विल बी कॉल्ड लेवल कर्व एट अ हाइट c, because z represents height. ठीक है, and what will it have? It will consist of all the points which are satisfying fxy equals c. So इसका क्लियर शब्दों में मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है उसको आपने डिफरेंट z वैल्यूज पे कट किया. ठीक है, सो हमारे z वैल्यू 5 थी, 8 थी. जनरल टर्म्स में वी कैन यूज z equals c, a, b, whatever. ठीक है, हमने कट किया. अब ये वाला चीज है ना जो इंटरसेक्शन हो रहा है हमारा, राइट? ये वाला एरिया होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एरिया है जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा होगा. अब इसको आप एक्स एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट कर दो मतलब आप ये मान लो कि यहाँ पे आपने एक लेट्स से एक प्लेट रख दी है और ऊपर से आप टॉर्च जला रहे हो. तो टॉर्च का कौन सा हिस्सा ब्लैक, तो नीचे लेट्स से नीचे फ्लोरिंग है. ठीक है, आपके पास एक प्लेट है, प्लेट को ऊपर से आप टॉर्च दिखा रहे हो, तो जो हिस्सा प्लेट का है सिर्फ वो कवर हो जाएगा, बाकी जगह रोशनी रहेगी, राइट? तो जो कवर्ड एरिया है उसको दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टिंग दैट एरिया. तो ये एरिया अगर आप XY प्लेन में प्रोजेक्ट करके प्लॉट करो दैट इज कॉल्ड लेवल कर्व्स. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम टॉप व्यू से देख रहे थे, हमने ये जो एरिया था वो प्रोजेक्ट कर दिया XY एक्सिस में. सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन f at z equals 8. This will be called level curve of function, whatever function which was x square plus y square at z equals 5. Okay, this is the concept of level curves. ठीक है, लेवल कर्व्स का मतलब होता है आप डिफरेंट z वैल्यूज के लिए जो भी आपकी इक्वेशंस आती हैं उनको XY प्लेन में प्लॉट करो, तो उसको बोलते हैं लेवल कर्व्स.
ये कॉन्सेप्ट यूजफुल कहाँ होता है? अभी आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही किया, क्या यूज है उसका। तो जैसे धीरे धीरे जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में, कि यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है ऐसे सारे पॉइंट्स ऑफ गुड्स के पेयर जहां पे आपकी यूटिलिटी सेम है, मतलब आपको सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रही है। तो अगर इसका सपोज मैं एग्जांपल दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा रैशनल समझ में आए कि ये क्यों हो रहा है। सपोज यू हैव एप्पल्स एंड सपोज यू हैव ऑरेंजेस, एंड आपको अच्छे लगते हैं, एप्पल्स भी अच्छे लगते हैं, ऑरेंजेस भी अच्छे लगते हैं, और एप्पल्स और ऑरेंजेस खा के आपको खुशी मिलती है, और उस खुशी को मैंने सम रीजन समहाउ मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया कि x plus y is your utility. Utility meaning your happiness, ठीक है? तो your utility is defined by x plus y. What is x? Number of apples that you eat, and y is number of oranges that you eat. Okay? तो मैं बोलूं कि प्लीज मुझे वो सारे पॉइंट्स बताओ जहां पे let's pick a name. Okay, let's say money has utility level of 10. वो सारे पेयर ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस क्या क्या पेयर होंगे जहां पे मनी को 10 यूटिलिटी मिल रही होगी। सपोज हम मेजर कर पाते हैं कि कौन कितना खुश है, और 10 मतलब बहुत ही खुश है, तो मनी को हम क्या क्या चीजें दें कि वो 10 लेवल ऑफ खुशी अचीव कर लेगा। So I want all the points of apples and oranges कितने कितने होने चाहिए कि 19, okay 19, 28, 28, yes, lovely. 82. So similarly this can keep going on till this is 191, and it could also be that we give him all the apples, no oranges, right? All the oranges, no apples, right? आधा ऑरेंज आधा एप्पल, वो भी चलेगा, राइट? ठीक है। सो ये जो लेवल कर्व का कॉन्सेप्ट आता है, ये यहाँ पे यूजफुल या यस। But ma'am, indifference curve cannot touch any axis, na? हाँ, it cannot, it can actually, it can. No, but I read in the 12th standard that indifference curve cannot touch any axis. Okay. Because you have two goods, na? So you consume both. No, but I think here equation is there, that's why we can put 0, right? जनरली वो जो आप बता रहे हो ना कि इसको जनरली ट्रू होता है कि जनरली जो ह्यूमंस हैं दे वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ थिंग्स, बोथ द थिंग्स। एवरेज चीजें अच्छी लगती हैं कि हमें सांबर भी खाना है, हमें इडली भी खानी है, हमें डोसा भी खाना है, सिर्फ सांबर से मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो जनरल केस में इट इज एप्लीकेबल, बट यस यू कैन हैव केसेस जहां पे एक्सिस को भी टच कर रहा है। सपोज आपको कुछ चीज से नफरत है, तो सपोज यू डोंट लाइक, सम पीपल डोंट लाइक बैंगन, ओके, इफ यू गिव देम बैंगन दे विल हेट इट। आई मीन उनकी खुशी लेवल कम हो जाएगी अगर आप उनको बैंगन दे दो, राइट? सो इन दैट केस दे विल वांट टू कंज्यूम 0 यूनिट्स ऑफ बैंगन, राइट? बट एनीवेज, Yes, या सो द आइडिया वाज कि लेवल कर्व्स कहाँ पे यूज होंगे। सो जब भी हमें यूटिलिटी फंक्शन यूजुअली किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, लेट्स से इस केस में यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय x plus y, बट इफ आई हैव टू फाइंड इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है वो सारे पॉइंट्स जो एक इंसान को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे। तो अगर मुझे x plus y equals 10 पता करना है, उस केस में मैं लेवल कर्व्स का यूज करती हूँ, ओके? सो ये थोड़ा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है। I hope this concept is clear and the context is also clear. Yes, ma'am. Okay. I hope money is not angry at me. No, ma'am. Okay. All right.
So that website is super cool. I mean, I'd be glad if someday you could use it for something. Okay. अब जैसे सिमिलरली जैसे हमने यूटिलिटी की बात की, सपोज जैसे आप एक बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, आपको लेबर लगती है, कैपिटल लगती है आउटपुट बनाने के लिए, राइट, और आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आपको 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाना है, राइट, तो फिर आपके पास तो लिमिटेड कैपिटल और लेबर है, राइट, तो आप ये देखना चाहते हो कि अच्छा मैं वो 100 यूनिट्स कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आप कितनी लेबर, कितने कैपिटल, क्या क्या कॉम्बिनेशंस रख सकते हो ताकि आप सेम लेवल ऑफ 100 यूनिट्स जो आउटपुट है वो आप अचीव कर पाओ, राइट। सो वो सब केसेस में ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है लेवल कर्व का वो काफी यूजफुल है। सो ऑल द पॉइंट्स, all the different combinations of labor and capital that gives you same level of output, इसका एक बहुत पर्टिकुलर नाम है, it is called isoquants. Isoquants meaning ऐसे set of so it's a curve. Isoquant is a pair of labor and capital that gives you some certain level of output, उसको बोलते हैं isoquant. So जैसे हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे ऐसे ही isoquants होता है, ठीक है। Okay, moving on, there is one more simple thing regarding continuity, कि अगर आपको बताना है कि एक फंक्शन जो कि n वेरिएबल्स का है, when will it be continuous? So if it is made out of a combination of addition, subtraction, multiplication, division or functional composition of functions which are continuous, matlab, okay, okay, all right, let's say continuous. If I have different functions which are already continuous, if I sum them up, the resultant function will also be continuous. Let's say मेरे पास एक function है fx equals x, एक function है fy equals y, एक function है fz equals z, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों functions को add कर दिया, ठीक है, तो मेरा जो resultant function होगा x plus y plus z, it will also be continuous, okay. So ये this is just to tell you that if you add, subtract, divide and multiply, and there is one more thing which is functional composition. So I'll tell you what functional composition is. But if you add continuous functions, if you subtract continuous function, if you divide continuous functions, and if you multiply continuous functions, the resultant function will also be continuous. एक caveat है, एक चीज है जो आपको ध्यान रखने की है, वो ये है कि वो defined होगा जहां पे उसकी values exist करती हैं. Suppose आपने एक function है x, मेरा एक function, one of my function was this, one of my function was this, ठीक है, you divided both of them, what did you get? Fx comma y is x divided by y, and then you'll say it has to be continuous everywhere. No, it will only be continuous at the points where it is defined, okay. So y equals 0 के लिए ये function defined ही नहीं है, तो यहाँ पे ये continuous भी नहीं होगा, ठीक है। Similarly, functional composition का मतलब होता है जैसे my function, let's say my function is x squared, ठीक है, and I want to do and my function gx is let's say under root x, okay, and then I want to do g of f of x, right, that means I want to do g of x squared, right, and that is equal to under root of x squared, that means this is x. This is called functional composition. तो अगर आप दो functions की functional composition मतलब एक दूसरे के अंदर values डालना, या फिर one of them is a composition का मतलब होता है they are together somehow, ठीक है। So here this is a functional composition of fx and gx, right?
So अगर दो continuous functions का functional composition भी करते हो तो भी वो जो है वो continuous होते हैं wherever they are defined. So people might ask you in your exams that is it continuous, so you just have to mention कि wherever it is defined it is continuous if you are doing all the kinds of manipulations on the functions which are already continuous. ठीक है? This was just a little thing that I wanted to tell you before moving on. I think any doubts till this point? No, ma'am. Okay. So what I would ideally like to do is I would like to stop here because it's our first class. I don't want to overburden you guys. In the next class, we will talk about partial derivatives. We will talk about all the other things that are involved. We will have a class tomorrow, the same mathematics class tomorrow from 5 p.m. Maths class. I'll send you the link. I'll share the link with you. So for maths, we have a class at 5. And for those of you who are also would like to attend the macroeconomics class, so we have introductory macroeconomics class in the morning from 10 a.m. to 1 p.m. We will talk about different things that we are going to study, and we will begin with national income accounting there. So we have introductory macro class 10 a.m. to 1 p.m. tomorrow, and we have maths class from 5 p.m. to again 7:30, and you'll get breaks in between. And apart from that, I really enjoyed teaching you guys. Your batch is quite responsive. I really like that about you. And yeah, the floor is open to you. Feel free to ask any doubts that you have. And also one more thing, you will be getting the recordings after every lecture. So the recording for this will be sent to you. I'll share a Google Drive link with you and you can access it anytime. The class notes, so the notes like these ones, so these are pretty neat. Whatever I do in class, it's just a little messy. If you want, I can share that with you as well as a class work, but you will be getting these notes for different chapters. And soon enough, we'll start doing past year questions as well. And yes, I think that's pretty much it from my side. Feel free to ask any doubts that you guys have. Ma'am, when we need to pay the fee, okay, how much is the fees? Okay, so usually what happens is before the next class. So for mathematics, we have the next class in the evening. So ideally, before the next class, for whichever course you want to enroll, it'd be much appreciated if you could do that. And how much is the course fee? Okay. Okay, all right. So the course fee per course we have kept at 4,000 rupees. And if you want to take the course as bundles, like both the courses together, then it'll be 7,000 rupees. And yeah, that's it. But if for some reason you are not able to, maybe some people might not be able to do it right now, maybe they need some more time, so you can personally tell me, talk to me. That'll not be a problem. Yes, it'll be for the entire semester, which is semester 2. So this course that I'm taking right now, which is introductory macro and mathematical methods for economics 2. So if you take both of them together, it's 7,000 rupees. If it's individually, you take up any of the courses, it will be 4,000 for the entire semester. Yes, for the entire semester. Yes. Okay, Parth, thank you.